आई थिंक मुझे नहीं खाना चाहिए. इट्स नॉट गुड फॉर माई हेल्थ. आई थिंक मुझे नहीं पीना चाहिए. इट्स नॉट गुड फॉर माई हेल्थ. What is this? So, in this new era of fitness, where most of us are very conscious about their physical health, that's good. But what about mental health? हम क्या चीज़ें खा रहे हैं और पी रहे हैं उसके लिए तो हम बहुत कॉन्शियस है. बट क्या हम अवेयर है कि किस टाइप का कंटेंट हम पढ़ रहे हैं, किस टाइप की वीडियोस हम देख रहे हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट mental health. In this podcast, we are going to discuss about mental diet. Let's begin. हेलो एंड वेलकम बैक टू थिंक अबाउट इट गाइस। मैं हूं आपका दोस्त समीर एंड ये है मेरा दोस्त सुबोध। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मेंटल डाइट। दोस्तों, इस प्रगति के दौर पर हर कोई ग्रो करना चाहता है, हर कोई आगे बढ़ना चाहता है। तो ऐसे में हमें मेंटली फिट रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है एंड इट्स अ गुड थिंग कि हम में से अभी बहुत से लोग फिजिकली फिट रहने के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, बहुत सी एक्टिविटीज कर रहे हैं। बट व्हाट अबाउट मेंटल हेल्थ? So Subodh, what do you think about mental diet? ओके फर्स्ट ऑफ ऑल समीर, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे आपके पॉडकास्ट पे बुलाया। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि कैसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर हम लोग आज डिस्कस करने वाले, बात करने वाले। एंड लेट्स ट्राई टू शेयर एज मच नॉलेज एज वी कैन। सेकेंड थिंग, एक ऐसी बात क्लैरिफाई करना चाहता हूँ मैं अपने व्यूअर्स के लिए कि वी आर नॉट एनी experts in the field of psychology or something. हम लोग जो भी information दे रही है, we are giving it with a perspective and keeping in mind with a purpose कि हमारे जो viewers है उनको बहुत easily understand हो जाए चीज़ें, okay? Because not everyone has a liberty कि वो लोग psychology पढ़ पाए, because it's a very complex thing to understand, right? So हम लोग वही information हमारे viewers के लिए एक simple और simplified format में लेके आ रहे, okay? So, getting to your question, Sami, mental diet. See, basically, the word itself has its own explanation. Okay, जैसे हम लोग हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए या फिर हमारे बॉडी शेप को, लेट्स जैसे हमको मसल गेन करना है या फिर वेट लूज करना है, फैट लूज करना है, तो हम एक पर्टिकुलर डाइट फॉलो करते हैं, राइट? एंड वी मेक श्योर दैट we get the end results. We stick to that particular diet and we get the end results. But in the same manner, when we talk about mental diet, a lot of people are not aware what type of consumption they are doing. Okay, so let's just say मुझे अगर weight loss करना है तो weight loss में क्या होगा, like calorific deficit आपका diet होना चाहिए, then reduce on fats, carbohydrates, जो भी the things which are affecting you or stopping you from developing a good body or a good health, you should cut out those things, right? In the same manner, mental health में हम लोग को पहले ये समझना चाहिए कि होता क्या है एंड कैसे उसकी शुरुआत होती है, हाउ यू कैन मेंटेन योर मेंटल डाइट, ओके? सो Yes. या फर्स्ट थिंग, मैं जस्ट 2 पॉइंट्स के ऊपर इसको क्लैरिफाई करना चाहूँगा मेंटल डाइट को. So the number one thing is consumption, and the second thing is accumulation. Okay. So Brian Tracy, जो एक renowned Canadian American psychologist है, उन्होंने बहुत सारे books लिखे. One of the famous book of them was Eat the Frog, No Excuses. ऐसे बहुत सारे कुछ amazing books उन्होंने लिखे. तो उनका एक statement, उनका एक you know एक आइडियोलॉजी है मेंटल डाइट के लिए, दैट इज कंजम्पशन एंड एक्यूमुलेशन. सो कंजम्पशन इज बेसिकली आप क्या देखते हो, ओके? Consume. सो इन टुडेज टाइम हमें अगर कुछ सीखना है तो व्हाट वी डू इज वी गो ऑन इंटरनेट, ओके? We go on social media. आज ह्यूमन ब्रेन इट्स इवॉल्विंग, ओके? इट्स वेरी क्यूरियस. उसे हर बार कुछ ना कुछ नया इन्फॉर्मेशन चाहिए रहता है, वो हर बार कुछ ना कुछ नया इन्फॉर्म रिस्टोर करते रहते हैं. एंड द मीडियम ऑफ रिस्टोरिंग दैट इन्फॉर्मेशन इज योर आईज, योर ईयर्स, योर माउथ, ओके? सो इन तीनों सेंसेस से हम कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन में रिस्टोर करते रहते, दैट मीन्स अक्यूमुलेट करते रहते, ओके? वॉट एवर वी कंज्यूम, इट गेट्स अक्यूमुलेटेड इन आवर ब्रेन.
सो वो इन्फॉर्मेशन नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, फाइन। वो वही इन्फॉर्मेशन आपका परसेप्शंस क्रिएट करता है टुवर्ड्स एनी पर्टिकुलर थिंग और सिचुएशंस इन योर लाइफ। ओके, लेट्स जस्ट से मुझे क्रिकेटर बनना है, फाइन, बट मैंने किधर से तो भी ये इन्फॉर्मेशन ली, या फिर किसी मेरे क्लोज फ्रेंड या कॉलीग ने मुझे बताया कि अरे क्रिकेट में करियर बनाने के लिए कितना कंपटीशन होता है, डू यू नो कि इतने सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, इतने सारे लोग मेहनत करते हैं, इतने सारे लोग रणजी ट्रॉफी के लिए अपना नाम देते हैं, बट देयर हार्डली 10 to 11 पीपल गेटिंग सिलेक्टेड। सो अगर किसी ने मुझे पहले ही मेरे दिमाग में एक परसेप्शन या फिर एक अक्यूमुलेशन सेट कर दिया है कि यार रणजी क्रिकेटर बनना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत सारा कंपटीशन है, इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट इन द एंड, राइट, आई कैन नेवर बी अ क्रिकेटर। सो ऑलवेज मेक श्योर कि आप जो भी कंज्यूम कर रहे हो, जो भी चीज़ें लाइक आप देख रहे हो, सुन रहे हो, बात बात कर रहे हो, वो चीज़ें आपके दिमाग में कहीं ना कहीं स्टोर हो जाती है। आप सबकॉन्शियस माइंड इट गेट्स स्टोर एंड इट यू योर एक्शंस एंड योर थॉट्स आर गोइंग टू बी अकॉर्डिंग टू दैट वे। यस। सो वो ये यू सेड अबाउट मेंटल डाइट, बट बहुत बार क्या होता है ना कि हम लोग समझ नहीं पाते कि कौन सा डाइट हमारे लिए अच्छा है या कौन सा डाइट ये नहीं। हम लोग जैसे बैठे हम लोग तो रील्स देखे जा रहे। तो फॉर एग्जांपल 30 सेकंड्स में हम लोग एक रील अगर पकड़ ले, तो अगर किसी बंदे ने अगर 30 मिनट्स में, अगर 30 मिनट्स कंटिन्यू कोई बंदा अगर देख रहा है, रील्स देख रहा है, तो वो 30 मिनट्स में 60 रील्स कंज्यूम करते हैं। राइट। नो मैटर उसके लिए हेल्दी भी नहीं होते, बहुत सारी चीजें उसके लिए यूजफुल नहीं होते। राइट। सो वो कैसे डिटरमाइन करे आजकल की जनरेशन कि कौन सी रील हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा वीडियो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये कैसे जान पाएंगे लोग? ओके, सी पहली बात तो आपने ये जो नंबर दिया दैट 30 मिनट्स में समवन इज कंज्यूमिंग 60 रील्स, ओके, एंड इट क्लियरली शोज दैट यू आर नॉट गिविंग योर ब्रेन द टाइम टू कॉम्प्रीहेंड ईच एंड एवरी वीडियो और ईच एंड एवरी कंटेंट दैट यू आर सीइंग। लाइक मैं अगर 30 मिनट्स में 60 रील्स देख रहा हूँ, ओके, मैं खुद के ब्रेन को टाइम नहीं दे रहा हूँ कि यार मैंने ये एक वीडियो देखा है, बट इज दैट वीडियो यूजफुल, या फिर उसके पीछे का मैसेज क्या है, वो क्यों बना है। लाइक मैं अपने ब्रेन को वो अपॉर्चुनिटी ही नहीं दे रहा हूँ कि वो अंडरस्टैंड कर पाए। इट्स जस्ट लाइक मेरे ब्रेन में एक डोपामिन केमिकल रिलीज होते जा रहा है, आई एम गेटिंग अ गुड सेंस ऑफ आई एम गेटिंग अ गुड सेंस ऑफ फीलिंग। मैं जस्ट देखते जा रहा हूँ, देखते जा रहा हूँ, ओके। सो फॉर दैट नंबर वन थिंग इज यू हैव टू बी अवेयर कि अगर मैं कुछ भी कंटेंट कंज्यूम कर रहा हूँ, सो इज इट वैल्यूएबल। यू शुड हैव दैट अवेयरनेस कि यार अगर मैं कुछ वीडियो देख रहा हूँ या फिर कुछ बुक पढ़ रहा हूँ, सो इज इट वैल्यूएबल। लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट आई डू कि अगर मैं एक टाइम पे बहुत सारे बुक्स पढ़ता हूँ, fine, एक बुक के ऊपर मैं कभी रिलाई नहीं करता। सो इट गिव्स मी एन अपॉर्चुनिटी कि ये बुक जो मैसेज दे रहा है या फिर जो नॉलेज मुझे दे रहा है, इज इट गोइंग टू बी यूजफुल फॉर मी इन द लॉन्ग रन और नॉट, ओके। सो दिस इज हाउ यू क्रिएट एन अवेयरनेस, सेंस ऑफ अवेयरनेस, ओके। आप 1 मिनट आपने अपना सॉरी आप 60 रील्स देख रहे हो 30 मिनट्स में, बट आपने ब्रेन को टाइम तो दो उसे कॉम्प्रिहेंड करने के लिए, उसे समझने के लिए। आप उसे टाइम ही नहीं दे रहे हो, जस्ट आप देखते जा रहे हो, देखते जा रहे हो। इट मेक्स योर ब्रेन वेरी लेजी, उसको समझ में ही नहीं आएगा, नो उसको ये फर्क ही पता नहीं चलेगा कि यार मैं जो देख रहा हूँ वो सही है या गलत है। he cannot determine what is right or what is wrong. So number one thing is that टाइम दो। सेल्फ अवेयरनेस के साथ आप कुछ चीज देख रहे हो या फिर कुछ कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, तो उसको do it in a particular way that you can understand it first, and then you keep on watching it, okay. It happens a lot of time। अगर कुछ पर्टिकुलर कंटेंट मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो स्टार्टिंग में ही हम लोग देख के अरे ये अच्छा नहीं, सो यू जस्ट स्वाइप इट अप, राइट। सो ऐसे ही हम लोग अगर सेंस खुद में डेवलप करेंगे दैट this particular content is harmful for me or it's negative or positive for me, so it's going to be very easy for us to maintain a good mental diet। जैसे हम लोग रहते हैं when we are maintaining a physical diet, okay। So if I see a stall of pav bhaji, I know it's going to be very difficult for me to resist myself, but at the same time I also know कि यार अगर मैं पाव भाजी खाऊंगा तो मेरा कैलोरीज बढ़ेगा, it will affect my diet schedule, right। Right. So in the same manner you have to be aware कि अगर मैं कुछ देख रहा हूँ तो give yourself the time to think ये right है ये wrong है, it's in that manner।
राइट यू सेड स्टॉप इन अवेयरनेस। अवेयरनेस का Right. आपको जो पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि अवेयरनेस होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये सिर्फ Right. यूट्यूब के लिए नहीं, ये सिर्फ आपने कहा था, अगर फॉर एग्जाम्पल हम लोग फेसबुक ले, व्हाट्सएप ले, अगर Right. आपको कौन सा भी मैसेज आपको पॉपअप करता है तो आप में Right. एक अर्ज आती है अंदर से कि उस पर क्लिक Exactly. करें, उसे देखें क्या है मैसेज। और कभी कभी तो हम लोग बिना पढ़े ही डायरेक्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। सो Exactly. फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड ये मैसेज मेरे लिए यूजफुल है, जिसको मैं भेज रहा हूँ उसके लिए यूजफुल है कि नहीं। तो उसके लिए Right. हमें मतलब वो जानने की जरूरत है, Right. रादर देन जस्ट मैसेज देखा, सेंड किया। तो उसी के Exactly. लिए अवेयरनेस होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। That's true. अभी हम लोग ये जो मेंटल डाइट को एक्चुअल डाइट से कंपेयर करके देखते हैं। Mm-hmm. अगर आप किसी के घर पे जाते हो, Mm-hmm. सपोज अगर आप होटल में जाते हो, किसी के घर जाते हो, तो आपकी कुछ जैसे आपकी चॉइसेस होती है कि आपको ये खा, या आप ऑयली नहीं खाते हो, स्पाइसी नहीं खाते हो, अपने भी चॉइस, कोई लोग मीठा नहीं खाते। Right. उसी तरह अगर फेसबुक में या फिर यूट्यूब में आपको फीड में कुछ भी आते रहता है कंटेंट, दिन भर की इसमें आपको अलग अलग टाइप का कंटेंट आते रहता है, एंड यूट्यूब आपको सजेस्ट करता है कि यूट्यूब वांट्स यू टू वॉच, Yes, ज्यादा exactly. समय के लिए आप यूट्यूब पे रहो, यूट्यूब Right. वांट्स टू रिटेन यू। तो आप जैसा कंटेंट देखते हो उसी टाइप का कंटेंट सजेस्ट आपको यूट्यूब सजेस्ट करता है, Right. राइट। तो अगर Right. आप उसी को अगर मतलब बोलते हैं ना अधीन हो जाते हैं, तो आप Right. उस कंटेंट को मतलब अपने ऊपर हावी होने देते हो। उसी की तरह अगर आप आपने डिसाइड किया कि अभी मैं मीठा नहीं खाऊंगा या फिर मैं बहुत ज्यादा ऑयली नहीं खाऊंगा, तो आप Right. कहते हो फिजिकल फूड के लिए कहते हो आप कि नहीं, आई एम ऑन Mm. डाइट। Right. तो ये चीज हम लोग अगर कहेंगे सोशल मीडिया के लिए कि आई एम ऑन डाइट, आई एम Mm-hmm. नॉट गोना कंज्यूम दैट वीडियो पर्टिकुलर, दैट पर्टिकुलर मैसेज इज नॉट यूजफुल फॉर मी। अगर Right. ये अवेयरनेस आ गई तो मुझे लगता है कि बहुत सारे जो आगे आने वाली जो कौन से वहीं पर रुक जाते हैं। There was this one term, social media diet करके था. Like there was this one trend going on YouTube. Lot of people or influencers what they did कि उन्होंने एक break ले लिया था social media से. सोशल मीडिया डिटॉक्स, सोशल डिटॉक्स। Yeah, social detox. Sorry. So exactly, social detox में उन्होंने यही understand किया that being constantly on social media was affecting their mental health, right? They were getting triggered through their negative emotions. Their negative emotions was getting triggered. So उन्होंने क्या किया कि सब accounts बंद कर दिए, right? So there was this one yeah, there was this one famous YouTuber, Logan Paul, right? So he has around 22 million subscribers on YouTube. He went through a crisis in his life और उसने social media से एक ब्रेक ले लिया, क्योंकि बहुत सारे उसके ऊपर हेट कमेंट्स आ रहे थे, बहुत सारे नेगेटिव वीडियोस बन रहे थे उसके अगेंस्ट, एंड ही वाज हिज मेंटल हेल्थ वाज गेटिंग अफेक्टेड. एंड या तभी उसने सोचा कि दिस इज अ टाइम आई नीड टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम सोशल मीडिया. And after which, when he came back, he was a completely different person. Because see, we have this thing known as suggestion. We get influenced by other people's suggestion, right? So social media में क्या होता है, हम लोग दूसरे लोगों की life देखते हैं, okay? So they are suggesting us that this is the kind of life that I am living. What are you doing? Okay. एंड दिस इज द So रियलिटी दे शो yeah, they अल्टीमेटली। show reality कि हम लोग ऐसे, but they see everything what you show on virtual world is going to be good. No one is going to show their bad side कि मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रहा है कि मैं बीपी की गोलियां ले रहा हूँ. Like no one is going to show that, right? इट्स जस्ट Everyone is going to show वन साइड the ऑफ best रियलिटी। side, right? यस, So in the same manner, you have to understand this thing कि जो भी social media के ऊपर दिखाते हैं, that's not a reality. That's not a reality. Okay? Through their graphics or through their marketing tactics, जो भी ये लोग दिखाते हैं, it's something just as to entice you, just as to keep you more engaged on their platform so that they could earn more bucks. That's राइट। it. एंड जब भी हम लोग देखते हैं कोई भी डेटा अगर कंज्यूम किया हम लोगों ने, तो वी Right. थिंक कि अगर हम लोगों ने हिस्ट्री डिलीट कर दी, बहुत लोग वैसे हम लोग अगर 11 12 में कॉलेज आने वाले में एक ट्रेंड होता है कि अब हम लोग वॉच हिस्ट्री डिलीट कर देंगे, किसी को कुछ हाँ, पता नहीं चलता। बट exactly. नॉट नॉट हियर। आप वॉच Right. पीसी से या लैपटॉप से तो डिलीट कर सकते हो, लेकिन जो Mhm. यहाँ में फीड अगर बैठ जाता है तो उसी के लिए बहुत सारे अपने संस्कार हम लोग को चेंज करने पड़ते हैं, Right. थोड़ा टाइम देना पड़ता है। ये इतना ग्रेजुअली होता है, हमें बाद में अगर जब हम लोग ट्राई करते हैं, नो फैप चैलेंजेस हम लोग ट्राई करते हैं, तो उस Right. वक्त ये हो नहीं पाता है क्योंकि पहले से बहुत सारी चीजें भरी होती है। तो हम लोग Exactly. भले ही लैपटॉप से डिलीट कर दे, लेकिन यहाँ Right. से डिलीट होने के लिए बहुत सारा मेडिटेशन और नॉलेज की जरूरत होती है।
Right, तो exactly. इट्स द टाइम, Right. पर्टिकुलर टाइम। वही एंड है। आपने जो So, कहा कि जो फीड पे आता है सोशल हम्म, मीडिया के टाइम, ये खुद मैंने भी और आपने भी अपने लाइफ में ये फील किया होगा right. कि बहुत अगर टाइम हम लोग अगर सुबह-सुबह कभी कभी बैठ जाए, 2 या 3 घंटा हम लोग कंटिन्यू अगर सोशल मीडिया पे रहते हैं, तो वी जेन्युइनली फील कि हम लोग उसके बाद जो हमारा प्रोडक्टिव रहता है, कुछ हद हम्म, तक कुछ पैमाने तक कम हो जाता है। हम्म, फील लेज़ी, वी फील वेरी लाइक कुछ करने की yes, इच्छा नहीं होती। ये yes, होता है। absolutely. Right. एंड That's true. आई रियली थिंक कि सोशल मीडिया जो है, इट इज़ लाइक ड्यूअल एज्ड स्वॉर्ड। उसे आप हम्म, अच्छे के लिए भी ले सकते हो, उसकी प्रोस भी है, उसकी कॉन्स भी है। अगर आप right. अच्छे के लिए ले सकते हो तो बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हो, पैसे कमा सकते हो, नॉलेज भी ले सकते हो। क्योंकि बहुत सारी Exactly, अच्छी वीडियो यूट्यूब पे, exactly. राइट? अगर आप Right. नेगेटिव वे में लोगे, तो लिटरली आपका ग्राफ ऐसे नीचे जाना है। तो इट्स अप Right. टू यू कि आप क्या कंज़्यूम करते हो। Right, that's true. That's very true. That's very true. See, social media has created something that is known as an illusionary world. Okay, लोगों को लगता है कि जो सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है दैट इज राइट. Okay, हुँ, there are so many people or influencers जो सोशल मीडिया पे कुछ तो भी क्रिंज कंटेंट डालेंगे एंड दे फील दैट व्हाट दे आर डूइंग इज एब्सोल्युटली राइट. In their point it's okay because they are making money out of it, right? उनको व्यूज आ रहे हैं, उनको लोग लाइक कर रहे हैं, सो वो उनको सोचता है कि वो लोग ऐसे माइंडसेट में है कि यार हम लोग जो कर रहे हैं दैट इज राइट बिकॉज पीपल आर गेटिंग एंटरटेन्ड, पीपल आर लाइकिंग माई कॉन्टेंट, आई एम गेटिंग मनी आउट ऑफ इट, राइट? दे डोंट थिंक कि व्हाट कॉन्टेंट आई एम पुटिंग इज इट गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर द व्यूअर्स, व्हाट येस, विल बी द राइट। नेगेटिव इम्पैक्ट फॉर इट. ऐसा कोई नहीं सोचता, right? So we have to create that awareness ki, that we have to get out of that illusionary world. Yes. First, So like, we need to get out that fantasy world. exactly, And then to exactly, that fantasy, and we are getting used to that fantasy. हम right, लोग एक्चुअल लाइफ को, रियल लाइफ को छोड़ के वो फैंटेसी में ऐसे बह जाते हैं। हम लोग लगता है कि दिस इज रियलिटी। हम right. लोग That's रियलिटी true. को ब्लेम करते हैं। That's true. एंड So की बुक है कि डू यू नो दैट, लाइक डू यू रिमेंबर दैट नेम? श्वेतक which one? भगत की बुक, द रूडेस्ट बुक है, राइट? यस, द Yeah, the रूडेस्ट बुक root है। is. यस, तो Right. उन्होंने चैप्टर में भी उन्होंने कहा है कि ये यूट्यूब पे तो आपको एक Mhm. इमेजिनरी गर्लफ्रेंड दिखाते हैं, इमेजिनरी गर्लफ्रेंड, इमेजिनरी Yeah, बॉयफ्रेंड। तो दे शो exactly, यू दैट exactly, काइंड ऑफ बॉयफ्रेंड, दैट काइंड ऑफ exactly, रिलेशनशिप। exactly. बहुत That's रोमांटिक होता है, कंटिन्यू मतलब मनाने वाला, दैट right, अलग अलग टाइप का दिखाते हैं, व्हिच इज वेरी, right, व्हिच इज लाइक जस्ट लाइक अ फैंटेसी। तो यू right, right, फैंटेसाइज अबाउट योर गर्लफ्रेंड, लाइक मेरी गर्लफ्रेंड ऐसे होने चाहिए, मेरा बॉयफ्रेंड ऐसा होना चाहिए। सो right. आप एक्सपेक्ट करने लगते हो अपने एक्चुअल लाइफ से, Yes, एंड दैट्स that's व्हाट true. द प्रॉब्लम स्टार्ट्स। दैट्स That's वेयर द true. प्रॉब्लम। That's true. You know, lot of people out there they say that I'm very picky. I have certain standards and this and that. But when you actually come to understand their standards in terms of dating, okay, in terms of getting into relationships and all, तो वो लोग बोलते हैं कि I have certain standards. मुझे ऐसा लड़का चाहिए, ऐसी लड़की चाहिए, okay. Also, a lot of girls have who are living in this illusionary world. They have unnecessary hypothetical expectations. My partner should give me a diamond ring. He should propose me in front of this and that. They are living in this illusionary world. Ki they feel that whatever is showed on Instagram and social media, it's true. They create a sense of perceptions in their mind. That I want a guy who has six packs and abs, or guys are like, I want a girl who has who has a figure like 36, 24, 36. Uska figure hona chahiye. She should be tall. And all these hypothetical things that they have in their head, which they feel is right, but which is not. यस। Yeah. Yes. ओके, नेक्स्ट इज वी थिंक दैट कि हम लोग जिस टाइप का कंटेंट कंज्यूम करते हैं वो हमें Mm-hmm. इतना लेवल तक अफेक्ट नहीं करता। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, कोई अगर मतलब या फिर कॉलेज जाने वाला बंदा होगा, Mm-hmm. उसकी थॉट प्रोसेस, एंड कोई बंदा अगर जॉब के लिए होगा, उसकी और एक मैनेजर लेवल की पोस्ट होगा, उसकी जो सोच होगी, थॉट प्रोसेस, उनमें Mm-hmm. हाई लेवल का डिफरेंस होगा। तो Yeah. ये सिर्फ उसी के लिए नहीं कि उसके पैशन मतलब उसके प्रोफेशन की वजह से नहीं होता है। आई थिंक Right. ये जिस टाइप का कंटेंट वो बंदा कंज्यूम कर रहा है, उस पे Mm-hmm. भी मतलब डिपेंड करता होगा कि किस टाइप का Right. कंटेंट कंज्यूम करता है। तो आप और मैं बात कर रहे हैं, Mm-hmm. हम लोग जो वर्ड्स यूज कर रहे हैं, कहाँ से आए वो वर्ड्स? जिस टाइप का कंटेंट हमने देखा है,
जिसका Exactly. कंटेंट हम, तो यही Exactly. हमारा भारत है। अगर Right. हम लोग ने ऐसा कुछ कंटेंट देखा होता या फिर कुछ कंटेंट हम लोग ने देखा, तो Mm-hmm. उसी टाइप के वर्ड्स, उसी टाइप के जो चीजें आउटपुट हमारे एक्शंस में आती थी। Right. हाँ, और जब हम लोग कहते हैं कि स्लिप ऑफ टंग क्यों होता Yes. है? हम लोग बहुत बार ट्राई करते हैं कि हम लोग उसके सामने, उस व्यक्ति के सामने वो चीज ना लाए, Right. लेकिन हम लोग बोलते हैं। ये क्यों होता Right. है? क्योंकि हमने कभी ना कभी उस इंसान के बारे में ये चीज सोची रही होती है, उसे Exactly. बात निकलती है। Right. राइट, हम लोग सोचते हैं कि हम जो सोचते हैं वो कंट्रोल Mm-hmm. नहीं कर सकते, जो एक्शन को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। बट द थिंग इज, हमारे सोच पे काम करके उसे कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग, Right. आई थिंक। Right. यस। Right. So see, over here the thing is कि emotions trigger करते. Okay. So social media has that ability to trigger your emotions, right? So for example, जैसे आपने एक example दिया था कि एक manager का और एक college going student का, right? So college going student का, it's very obvious, he is at his most vulnerable stage in life, right? He or she has started exploring the world. They have stepped into something new, that is college. Then they come across new people, they meet new, make friends, then they understand about dating and all. Everything is very new for them, right? So they, the type of content that they consume on social media, it's obviously enticing or triggering their emotions. Okay, so that's the reason they can relate to that particular content. Okay, so for example, कोई एक ऐसा influencer है who makes videos where he shows, you know, he has this particular thing happened with you in college. Okay, and then someone who is from college, अगर वो particular video देखता है, उसे लगता है yeah, I can relate to this, because उसका emotions trigger हो गया. But they don't actually understand कि ये मेरे साथ actually हुआ है नहीं हुआ है. You know, in the same manner, it's as I said, it's all about self awareness. यस। And when you become a manager, you know, you have certain set of responsibility, you have experienced your life at certain level, like 10% to be experience liya hai apne life ka, right? So whatever content you consume, uh, so you know, so for example, if I have to say कि अगर मुझे अभी at this age now I'm 25, so what is the type of content that I will consume? I will either consume something that is informational, at the same time I will also consume something that is entertaining, right? But if you ask someone who is in their teens, like 16, 17, 18, okay, they will say that I want to just consume content which is like exploring. I want to explore the world. I want to enjoy. I want something that could be entertaining. But and at the same time, if you ask someone who is in the adulthood, like who is in the late 60s or whatever, they will say that I want a content which could give me a peace of mind. I want calmness. You know, संस्कार भारती की जैसे बात कर रही है और so it's also a matter of your age. Okay, it's also a matter of your life experiences. चॉइसेस। Yes, exactly. But at every stage of your life, you have to be aware. But if, let's just say, if I'm a person who is in his 25 and I said, like, I want a content which could be informative, which could help me grow in my life, at the same time, thoda sa entertaining. Fine. But if I'm someone who is only engaged into the content which is entertaining, there is nothing going to help me, right? राइट। अगर जस्ट मैं जस्ट एंटरटेनमेंट की बात करूंगा एट दिस एज, it's not वी आर, going to help me in longer run. I might, as you said, the graph will go down. Yes, sir. राइट। सो आपने एक टॉपिक कहा कि एक पॉइंट का आपने सेल्फ, ये अपने सेल्फ अवेयरनेस का। सो Right. उसके लिए आई थिंक जरूरी है कि इंट्रोस्पेक्शन, Yes. आत्मपरीक्षण में बहुत ज्यादा जरूरत है Yes. कि हम लोग जिस टाइप का कंटेंट कंज्यूम करते हैं, अगर Mm-hmm. हम लोग इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले हम लोग जस्टिफाई करना बंद करेंगे। हम लोग ये टाइम पास के लिए नहीं देख रहे। Right. जब तक Right. जस्टिफाई करते रहेंगे तब तक हम लोग कंक्लूजन तक पहुंचेंगे नहीं। ये हमारी गलती। सो व्हाट डू यू थिंक कि इंट्रोस्पेक्शन कितना जरूरी है? See, introspection is something कि we don't understand the terminology introspection. Like frankly बताऊं, मुझे तो ये terminology पिछले 2 या 3 साल पहले पता चली. Uh, we just go with the flow. When we are young, we don't understand. जो दुनिया कर रही है हम लोग भी वही करते हैं, right? And it's okay. It's okay because 21, 22, it's not an age
where we have figured out our life, you know, सब पता है हमें. We have figured out our career, we have figured out our relationships. No, no, it's fine. It's completely fine. But as you grow and move ahead in your life, you have to start introspecting, because till this point you had certain experiences. Okay. Right. So when I was a teen, when I was in my 18 and 19 years, uh, तभी if I say that I needed something known as introspection, though it's wrong, because मेरे पास experiences नहीं थे तभी, right? कुछ introspect करने के लिए कि यार मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या, या फिर where I need to change myself, where I need to improve myself. But now when I'm 25, तो मैं ये बोल सकता हूँ that I have certain experiences, at least 10% of experience है मेरे पास मेरे life का, कि I could introspect what I am as a person, what I want in my life, and what I don't, right? So yeah, introspection के लिए there are various methods. You start journaling, you start exercising, you start exploring various fields in your life, or either you get into one of the best practices, that is meditation, right? Meditation. But it completely depends upon you what you feel is the right method for you to introspect yourself, because the ultimate goal is to understand कि तुम्हें life में क्या चाहिए, एंड right? आई थिंक आफ्टर इंट्रोस्पेक्शन कि आप एक चॉइसेस क्रिएट कर सकते हो, यस और Hmm. नो. यहाँ Exactly. पे कंसेप्ट है आर्ट ऑफ सेइंग नो. जैसे Right. आपने कहा कि इंट्रोस्पेक्शन करने के बाद हमें अवेयर होंगे कि हम लोग किस टाइप का कंटेंट हमारे लिए जरूरी है, Right. कि That's हमें true. ग्रो करने के लिए किस टाइप का कंटेंट जरूरी है. Mm-hmm. वो हमें एक अल्टीमेटली एक पाथ दिखाता है कि हम लोग इस पाथ से जानेंगे, हम लोग तो सब चीजें मतलब जल्दी ग्रो कर पाएंगे. Right. That's तो true. यहाँ पे एक जैसे आपने कहा कि आर्ट ऑफ सेइंग नो, तो Mm-hmm. जैसे हमारे फीड का जो भी टाइप का कंटेंट आता है, Mm-hmm. तो क्या सभी वीडियोस देखना जरूरी है कि उसमें हम लोग चूज ही होना कितना मायने रख सकते हैं. As I said कि अगर आपका why clear होगा, right, कि मुझे life में क्या करना है. So let's just say I'm someone who speaks about personality development, communication skills, या फिर I speak about digital marketing. I know what I want in my life. Okay. I know where I want to be after 10 years, or after 5 years or 10 years, what I want to do in my life, right? So, you know, जब मेरा why clear होगा, आई नो कि मुझे क्या टाइप का कंटेंट कंज्यूम करना है और क्या नहीं करना है. ओके. अगर मेरा वाई क्लियर नहीं होगा, if I am someone कि यार चल ये ट्राई करके देखते हैं, let's just try getting into this particular field, let's just try getting into that particular field. So my why is not clear. Until and unless my why is not clear, मुझे समझेगा नहीं कि मैं क्या टाइप का कंटेंट कंज्यूम करूँ, right? if uh, if I have decided I want to spend 30 minutes of my daily life on Instagram, okay, तो उस 30 मिनट्स में अगर मैं अपना वाई क्लियर कर दूं कि क्या टाइप का कंटेंट मुझे कंज्यूम करना है, आई वांट टू कंज्यूम समथिंग रिलेटेड टू माय पर्टिकुलर इंटरेस्ट, एरिया ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज पर्सनालिटी डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन और डिजिटल मार्केटिंग, मुझे इसमें कुछ तो भी करना है और इसका नॉलेज गेन करना है, और एल्स इफ माय वाई इज नॉट क्लियर, तो जो इंस्टाग्राम मुझे दिखाएगा मैं वो जस्ट देखते रहूँगा. ओके. Either they will show me astrological stuff, or either they will show me girls who are semi nude, okay, or either they will show me some guy or girl who are living a lavish life, okay. This is Right. what they will show me, or someone telling their breakup stories, right? And they know that this is what people want. They think Exactly. just Exactly. So show you that. your why should be very very clear when you want to do anything in your life. Okay, may it be consuming content or taking any future decisions of your life. Yes, right. That you said about why. So Right. we also need to be very aware कि अगर हम लोग 1 घंटे का या 2 घंटे का मूवी देख रहे हैं, या फिर Mm-hmm. कुछ वीडियो देख रहे हैं, या फिर कौन सी पॉडकास्ट या फिर रील देख रहे हैं, तो Mm-hmm. यू नीड टू थिंक कि ये वीडियो इज गोना बी यूजफुल, जो मेरा अगला 1 घंटा में उसके लिए दे रहा हूँ, Mm-hmm. कुछ आउटपुट आ रहा है यहाँ पे, ये हमें Right. जानना जरूर. एंड ये भी है कि हम लोग बहुत से बंदे अगर बोलेंगे अभी कि अभी हम लोग हमारा फीड ही ऐसा हो गया कि हम लोग उसको चेंज नहीं कर पाते, Right. बट यूट्यूब That's में true. चांस. आपको यूट्यूब बहुत बार सजेशन देता है कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है, आप उसको नॉट इंटरेस्ट हमने करके स्किप कर सकते हो, और ये चीज 4 या 5 बार करने के बाद आपको प्रॉपर कंटेंट आपको जैसा चाहिए वैसा कंटेंट आपको Exactly. आना शुरू हो जाएगा. तो इट्स Exactly. नॉट लाइक इम्पॉसिबल है कि ये हो ही नहीं Right. सकता. Right. Yes, yes. Right.
Yeah, as I said, like self-awareness is created after an experience. You cannot be like कि at the early 20s आपको पता चल जाएगा कि that yeah, this is what I want to do. No. Go with your own timeline. Go with things by taking your own experiences and then decide what you want. I said. राइट। एंड नेक्स्ट चीज कि हम लोग बहुत आज के बंदे लोग बहुत डिस्टर्ब हो गए Mm-hmm. कि लाइफ में चॉइसेस लेने के लिए, डिसीजन लेने की बहुत तकलीफ होती है कि ये भी चॉइस है, ये भी चॉइस है, ये भी चॉइस है, तो इसके लिए हम लोग क्या कर पाएंगे? एंड आई थिंक कि किसी तरह से सोशल मीडिया की वजह से हो रहा है कि हम लोग बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गए। Mm-hmm. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग लेंगे कि व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया, हम लोग ने क्लिक किया, वहां पे गए, उसके बाद इंस्टा पे मैसेज आता है, यहाँ से जंप करके हम लोग वहां पे गए, और शायद हो सकता है कि फेसबुक पे भी एक मैसेज आए, तो हम लोग यहाँ पे जंप करके वहां पे मतलब बार बार यहाँ पे अलग अलग जगह पे जंप करते रहते हैं। तो आई थिंक कि मुझे लगता है कि ना हमारा माइंड एक पहले प्रोसेस में होता है। व्हाट्सएप पे मैसेज देखते हैं हम लोग, हमारे दिमाग Right. में चलता है कि हम लोग उस मैसेज के बारे में हम लोग सोचते हैं, Mm-hmm. उसी के बाद तुरंत हम लोग एक पे स्विच करते रहते हैं। तो आई थिंक हमारे माइंड को उतना प्रॉपर टाइम नहीं मिलता कि उस पे हम लोग सोच पाए, क्योंकि हम Right. लोग कुछ भी चीज करते हैं सोच समझ के करते हैं। तो Exactly. प्रोसेस को जब भी टाइम लगता है कि व्हाट्सएप पे हम लोग मैसेज देख रहे हैं, उसी Mm-hmm. वक्त हम लोग इंस्टा पे चले जाते हैं, एंड हमारा माइंड रहता है व्हाट्सएप वाले में। Exactly. तो इसी Exactly. के लिए बहुत लोग कहते हैं कि पढ़ाई के टाइम मोबाइल थोड़ा साइड में रखा करो, Side में बट रखो. कुछ लोग बोलते हैं मोबाइल पे पढ़ाई करते हैं। Right. तो आई थिंक उसी के लिए अगर सोशल मीडिया हम लोग पढ़ते वक्त थोड़ा सा कम कर दे या फिर बंद कर दे, तो आई थिंक Mm-hmm. कि दैट वुड बी यूजफुल। ये आपको डिस्टर्ब रहने के लिए मतलब थोड़ा दूर रखेगा। थोड़ा दूर रखिएगा. See, uh, यस। at the initial जब आपने क्वेश्चन पूछा था रील्स के बारे में, आपने एक एग्जांपल दिया था मुझे, राइट? यस। 30 मिनट्स में 60 रील्स देख रहे हैं. एज आई सेड कि यू आर नॉट गिविंग योर ब्रेन टू प्रोसेस व्हाट यू थिंक. कॉम्प्रिहेंड ही नहीं हो रहा है, ब्रेन को टाइम ही नहीं मिल रहा है यार. मैं जो पढ़ रहा हूँ या जो टाइप का कंटेंट मेरे फेस के सामने, मेरे आंखों के सामने है अभी, what is it? Is it negative or positive? Is it useful for me? You are not giving your brain to understand or to comprehend to anything. Okay, तो जब तक, and the second thing as you said about options बहुत available है, right? We cannot decide, we are disturbed in our life, right? कभी कभी लगता है कि यार मुझे ये करना है because सोशल मीडिया पे दिखा है कि ये करने से doing this XYZ particular course you will become successful in your life, so I want to do it. ओके, राइट। बट देन यू फील नो नो डू, आई थिंक ये कोर्स करूंगा तो मैं सक्सेसफुल ज्यादा हो जाएगा, मुझे अच्छा सैलरी मिलेगा. You are going to have options in your life always. Okay, so if we talk about our father's generation, okay, the baby boomers generation, they didn't had any options. Okay, the only thing that they knew is either they prepare for government job, okay, or they do some sort of business, chota mota business, right? So यस। their कोई focus was very clear because options ही नहीं थे. Today we have options, but we have to be aware by our own self कि यार मुझे life में क्या करना है, मुझे कहाँ जाना है, मेरे पास बहुत right? सारी। राइट। Exactly. So due to availability of options, we have become so weak, okay, that we give up very easily. Let's just say I got into a particular field, for example, data science. Okay, I found it very difficult. I found it difficult to understand. Okay, so I decided नहीं करना है, छोड़ दो. Because I have, my mind is not that tough. Okay, but if I say कि नहीं भाई जो करना है डेटा साइंस में ही करना है, if not I am going to not do anything in my life apart from data science. Okay, so अगर ऐसा mindset set कर लिया, so whatever the problems may be or whatever the uh, circumstances may be, you will always find a solution to solve it and work on your field, okay, or work on the thing that you're interested in. So having lot of option, yes, it makes you frustrated because you feel कि उसका life अच्छा है, मेरा life खराब है, you start comparing. Okay, कंपेयर। having lot of option makes your mind weak. Okay, because you don't think rationally, you think emotionally, इमोशनली। right? So यस। आप अपने emotions का ज़्यादा use कर रहे हो think करने पर rather than thinking practically or rationally, ऐसे. व्हाट डू यू थिंक कि डोपामाइन का कितना रोल है यहाँ पे, और कैसे डोपामाइन यहाँ पे काम करता है? कोई भी हम लोग वीडियो देखते हैं तो। See,
डोपामिन एक बहुत इजी केमिकल है, हमारे ब्रेन में रिलीज हो जाता है। इवन अगर आपको मैं जस्ट बोल दूं यार समीर यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम टुडे, आप दिन भर आप खुश हो जाओगे। ओके। Right. So dopamine is something that can be released very easily, and that's the reason a lot of marketers or content creators जो है, they make sort of videos which will keep you engaged because आपका dopamine release होते जा रहा है। Okay, so there are this lot of marketing tactics there they use. They make use of catchy thumbnails, they make use of you know, beautiful and attractive people in their thumbnails, or yeah, they make use of something controversial topics. They come up with controversial topics because we are humans. We are more interested in gossips and to under what is happening in others' life rather than their own. Okay, dopamine release तो कहीं से भी होता है. Like you just watch one photo of some you know, semi Actress or naked girl and you will be like, "Arey, dude, just want to uh, jerk off to this particular person." It's that very easy now. लोग yes. सोचते ही नहीं है. That's the reason लोग सोचते नहीं है, and this is what the marketers or you know, the people outside are taking advantage of. Right. See, binge watching, yeah, quite a very famous terminology in today's state. If you don't binge watch anything, you're considered to be a boring person, right? Frankly. Right. Right. So I You am a always sort of a person कि मैं जब भी कुछ मूवी देखता हूँ या फिर कुछ सीरीज देखता हूँ, I don't watch it and complete it in just one go. Okay, अगर मैं एक मूवी भी देख रहा हूँ तो I will take at least 1 week to complete that movie because I am someone who believes कि you know, हर एक सीन हर एक डायलॉग मुझे अंडरस्टैंड करना है. I want my brain to process it and comprehend it. Okay, but what happens with people कि uh, they are just lost in that delusionary world. right. Right. जो स्क्रीन पे दिख रहा है, they are completely lost in that movie, they are lost in that world. A lot of times, you know, people who binge watch any series and if I ask them something, अरे ये particular character कौन है, कौन play कर रहा है, they said like नाम याद नहीं आ रहा है. हाँ. Or if you Right. ask them anything related to that particular movie or series, they say no, I don't remember. The screen is in front of them, but their mind is lost in something else. So it's just a mode of escapism for them. So the last thing is, how could meditation will help us here? See, I could tell about meditation is it will bring you back to the reality. It will bring you back to the real world. It will get you out of the originary world that you are living in or the virtual world that you are living in. So yeah, we could take a very separate topic talking about meditation because explaining it would be difficult Right. in just Right. in this very short span of time. So yeah, meditation का एक ही फायदा हो सकता है यार, you will get connected with your own brain, you will become more aware about your own self, who you are, what you want and what you want to do in your life. Okay. Right. uh, Right. yeah. So I feel कि any of our हाँ. viewers who is watching this video, I'd be really glad if they start meditating just by sitting in one place for 5 minutes, 10 minutes, and observing their breathing, Right. and they will understand कि यार the world, the virtual world or the imaginary world I was living in, it's completely different from the reality that I am right now. ऐसा And that gives you another perspective. हम लोग है. अगर पजल लोग ऐसे ऐसे नजर से देखते हैं तो हम लोग वहां पे हम लोग ऊपर से एक बर्ड्स आई व्यू देता है आपको मेडिटेशन. Right, right. शांत बैठ दृष्टा की दृष्टि से हम लोग देखते हैं उसी चीज को. Exactly, exactly. So that ultimately calms us and just see ki what's happening. Right, That brings you in present moment. right. Ultimately. That's true. You become very aware about your own self. That's more important. So that's it for today. Do you have anything to Yes. say? Both? The one thing I would say is, yeah, enjoy your life. Gain as much experiences as you can, because experience is what will build you in your future. But Right. also be aware that you know, don't fall into the illusionary trap of this virtual world because it's it's going to be, you know,
easy for you to get escaped from your reality, but that you have to face your fears, you have to face your problems in life and go ahead. Okay, so just don't feel like being getting an entertainment of 30 minutes or 45 minutes is keeps you happy. No, what about the rest of the time in your day? You have to make sure that you are always aware, and whatever content you're consuming, whatever things that you're watching on social media or books or podcasts, whatever you're listening, make sure that it's always positive. Okay, don't get into the negative cringe content, because it's going to be very self-sabotaging for you in the longer run. Okay, yes, that's it. And okay, and even if for it is for time pass, just for like 15 minutes we are watching. Right, We need to think that this is gonna affect us for a long time. This is a exactly, long-term investment. What exactly. kind of content we are consuming? This is for a longer Right, time. right. Yes. That's Thank you so much, both, for being on. Think Thank about you, it. Samir. Thank you. Thank Thank you you for so sharing. much. It was really great talking with you on this topic. Thank you. Thank you so much.